हेलो हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। अभी मैं लाइव आ गया हूँ। हेलो हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। अभी मैं लाइव आ गया हूँ। तो गाइस, आज हम लोग जो है अपना ये PHP पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट रीड अपडेट डिलीट इन लारावल विद मी, स्टडी विद मी सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लारावल पढ़ेंगे, PHP पढ़ेंगे। तो CRUD क्या होता है पहले लारावल में? क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। लारावल है क्या? लारावल इज़ अ पॉपुलर PHP फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग modern and dynamic web application in today's fast-paced, ever-evolving web development world। तो लारावेल में एलिक्वेंट होता है और ऑब्जेक्ट रिलेशन होते हैं, मैपर होता है, ORM होता है। पहले हम CRUD का देख लेते हैं लारावेल में कैसे बनेगा। तो हमारे पास ये VS कोड भी रेडी है। तो इस VS कोड में अभी हम एक नया प्रोजेक्ट ले लेंगे। ठीक है, इस सब फाइल्स को मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज ऑल कर देता हूँ ताकि मैं एक नया ही प्रोजेक्ट बना लूँ। फाइल न्यू प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये हमारा क्या बोलते हैं VS कोड, और एक प्रोजेक्ट इसमें खुला हुआ है। हमें फ़िलहाल न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये देख लेते हैं ये कहाँ पे बना हुआ था। तो हम लोग एक लारावेल में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए जो है, और एक प्रोजेक्ट इसमें खुला हुआ है। हमें फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल को हम फॉलो करेंगे कि इंस्टा ब्लॉग लारावेल CRUD, और एक CRUD हम बना ही लेते हैं फटाफट से। जैम्प चाहिए होगा हमें। जैम्प हमारा रेडी है, और कंपोज़र भी है हमारे पास। और इसमें अब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहले जो ये प्रोजेक्ट हमारा चल ही रहा था, इसका थोड़ा पाथ देख लेते हैं कि किस जगह बना हुआ है। ये रहा, htdocs के अंदर लिखा है लारावेल CRUD पोस्ट। तो आज हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो याद करने के लिए मैं कनिष्ठा के नाम से ही बना देता हूँ एक फ़ोल्डर। हम ये वाली वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, कनिष्ठा ब्लॉग लारावेल CRUD। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं इसके। तो CRUD बनाने के लिए लारावेल में, जैसे कि इंस्टॉल लारावेल एंड क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, क्रिएट अ डेटाबेस, टेबल कंट्रोलर, मॉडल राउट जनरेट ब्लेड फाइल, ये सभी कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पहली कमांड है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, जैसे हमने ये बनाया था ना। ये कहाँ है, इसका होवर करेंगे तो htdocs में लारावेल CRUD पोस्ट नाम से बना हुआ है। तो हम भी htdocs के पास ही चल रहे हैं और वो वाला फ़ोल्डर खोल लेंगे। चलो htdocs के पास चलते हैं। यहाँ हम टाइप कर दे रहे हैं htdocs। ठीक है, जैम्प का htdocs फ़ोल्डर होता है, हमने इंस्टॉल कर रखा है जैम्प, तो हमारा फ़ोल्डर आ गया। अब क्योंकि हम जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, हमारा को फ़िलहाल CRUD बनाना है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट लारावेल का। तो हम कनिष्ठा वेबसाइट से बना रहे हैं, तो मैं यही नाम रख देता हूँ KINSTA, कनिष्ठा लारावेल CRUD। ये एक फ़ोल्डर का बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, कहाँ बनाऊँगा? वैसे तो कहीं भी बना सकते हैं, फ़िलहाल हम यही बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसे करके न्यू फ़ोल्डर ले लेता हूँ। आई एम टेकिंग न्यू फ़ोल्डर। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। CRUD लारावेल। ठीक है,
ये यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट सेम टू सेम बनाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं इस प्रोजेक्ट को ही खोल लेता हूँ। ये सबको भूल जाना है, ये पुराना कोई प्रोजेक्ट बना हुआ था, कोई नहीं। यहाँ जाएंगे फाइल, ओपन फोल्डर, और जो फोल्डर मैंने अभी क्रिएट करा है ना, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर को मैं खोल लूँगा, तो वो पुराना फोल्डर अपने आप हट जाएगा, ये एक फ़ोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया। अब हमें करना है फॉलो सेम टू सेम। हमें अब इसमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है इसमें। तो एक टर्मिनल होता है, व्यू में जाओ, यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करो, टर्मिनल आ जाएगा। आ गया टर्मिनल। अब क्या होता है, ये टर्मिनल हमारे कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है, और हम इस ट्यूटोरियल को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए किस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल को, कनिस्टा ब्लॉग लारावेल क्रड करके। पहला कमांड है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, तो लारावेल न्यू क्रड पोस्ट। ठीक है, ऐसे है। पहले लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। कंपोजर की हेल्प से हमें ग्लोबली क्या करना है, रिक्वायर है हमें किसकी ज़रूरत है, लारावेल की इंस्टॉलर की। तो इससे हमारा लारावेल इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जब लारावेल आ जाएगा तो लारावेल न्यू क्रड पोस्ट करके इसने बनाया, न्यू क्रड पोस्ट, लारावेल न्यू क्रड पोस्ट। मैं ये कमांड चला के देखूं, लारावेल वर्जन का देख लेते हैं। अंदर से ही करके देखें क्या, ये क्या खुल जाता है बार बार। टर्मिनल खोल लिया, लारावेल -v देखें कुछ आता है। ये क्या आ गया, इसमें एरर आ गई। लारावेल को नहीं कोशिश कर रहा। हमें लारावेल इसने पहचाना नहीं है। टू लारावेल 10, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भैया इस लोकेशन पे हम लोग जो हैं लारावेल का नया कैसे बनाएं प्रोजेक्ट। चैट जीपीटी भी खुला है, चिंता ना करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। न्यू चैट, यहाँ इसको लिखेंगे, और वी नीड टू क्रिएट कंपोज न्यू लारावेल प्रोजेक्ट इनसाइड दिस फोल्डर। ठीक है, तो देखते हैं हमें लारावेल की मतलब क्या बताता है। ये कह रहा है पहले कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलो, फिर cd करके इस जगह पहुंचो, फिर कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल माई ऐप। पर हम नाम इसका क्या रख देंगे, हम इसका नाम रख देंगे क्रड पोस्ट, क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, cmd लेट अस ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हमें मिस्टर चैट जीपीटी ने बताया है। देन cd, और देखते हैं हमारा पाथ। इस पाथ में हम आ चुके हैं, वी हैव केम टू दिस पाथ। तो इस पाथ में हम आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम ये करेंगे, सोचता हूँ। हाँ, कमांड थी ना, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल दिस विल क्रिएट अ लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन माई ऐप।
इफ़ यू वांट फाइल डायरेक्टली इनसाइड लारावेल विदाउट अ सब फोल्डर, तो हमें तो सब फोल्डर चाहिए ही नहीं। तो हम लिखेंगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और डॉट बना देंगे। डॉट मीन्स क्या है, करंट, इंस्टॉल हेयर। तो हम इसे याद कर लेते हैं कमांड को, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। इधर लारावेल क्या है, कंपनी का नाम है, ये लारावेल इसका प्रोडक्ट है, और ये वेंडर का नाम है लारावेल, और लारावेल इसका प्रोडक्ट है, और ये डॉट मतलब किस जगह में चाहिए। तो ये कमांड हम चलाएंगे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल डॉट। हमें याद हो जाए इसके लिए हम टाइप ही करेंगे सीधे ही, कंपोजर। इज इट रीडेबल गाइज? शायद रीडेबल तो है। कोई भी आपका सवाल हो चैट में पूछ लीजिएगा, तो मैं उसका चैट में ही आंसर करने की कोशिश करूँगा। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल डॉट, एंटर मारते हैं। कोई गलती हुई होगी भाई सब बताएंगे, नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं। नाउ यू कैन सी गाइज, इट्स about to make a Laravel project, and it is using the latest Laravel version, that is 12, which requires PHP 8.2, which is not satisfied by your platform. Installing Laravel version 8.6.12. so मेरे पास PHP 8.2 नहीं है, तो इसने वर्जन 8 डाल दिया है Laravel का। कोई बात नहीं, वर्जन 8 से ही काम चला लेंगे। सिम्फनी वगैरह ये सब इंस्टॉल कर रहा है इस समय लारावेल को। ये लारावेल को इंस्टॉल कर रहा है इस समय। हमने कमांड चला दी है, लारावेल इंस्टॉल हो रहा है, वर्जन 8 इंस्टॉल हो रहा है लारावेल का, ठीक है ना। तो जब ये इंस्टॉल हो रहा है, इस जगह पे हमारे आ जाएगा ये इंस्टॉलेड लारावेल में। ये हम देख सकते हैं फाइलें यहाँ बनने लग रही हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हम ये फॉलो कर रहे थे एक ट्यूटोरियल को, क्रड बना रहे हैं हम, यहाँ पे हम ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं। क्रिएट अ डेटाबेस करके एक चीज़ आई, PHP माई एडमिन से हम एक डेटाबेस बना देते हैं, और डेटाबेस का नाम हम क्या रखेंगे डेटाबेस का नाम इन्होंने जो रखा होगा वही रख लेंगे, db/ इन्होंने तो डेटाबेस, चलो हम अपना रख लेंगे, हम रख लेंगे क्रड, है ना, पोस्ट क्रड, ऐसे ही कुछ नाम रख लेंगे हम। ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम ऐसे ही बनाओ, एक DB तो हमें बनाना है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि हमारा जो वहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था कमांड प्रॉम्प्ट में क्या है, एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुल, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है बन गया है, और जैम्प हमारा रेडी है ही, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। और एक तरीका बता देता हूँ जैम्प में जाने का, ये चल रहा है जैम्प, ठीक है। अब इस जैम्प से हम जाएंगे यहाँ, ठीक है, PHP माई एडमिन। एक डेटाबेस बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। आलतू फालतू चीज़ें बंद कर देते हैं, इसे भी हम देख रहे हैं। अच्छा, कि कह रहे हैं इस जगह जाके हम चेक कर सकते हैं, तो इस जगह जाके हम चेक कर लेते हैं पहले हमें कुछ आया कि नहीं आया। लारावेल तो इंस्टॉल किए हैं,
शायद PHP आर्टिशन सर्व लिखने के बाद चलेगा। अभी तो नहीं चला है। कि उसका खुद का सर्वर भी होता है, चाहो जेम के htdocs में रख दो, चाहे खुद के सर्वर पे रख दो। ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, मतलब आ तो गया। पब्लिक में जाता है, पर हम ऐसे नहीं चलाएंगे, हम इसमें ऐसे ही चलाएंगे। तो हम जाएंगे अंदर और इसमें लिखेंगे PHP आर्टिशन सर्व। अपना डिप्लॉयमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया, PHP 7.4 चल रही है और जो है स्टार्ट हो चुका है। अब इस पाथ पे जाके हम चेक कर लेंगे, और अगर हमने ये पाथ पर ऐसे क्या हो गया, नहीं ये तो ऐसी छोटी मोटी, इस पाथ पे जाके हम चेक कर लेंगे। आ गया वैसे हमारा क्रेड पोस्ट, ऐसे ही लिख देते हैं KINSTA कनिष्ठा लारावेल क्रेड, KINSTA कनिष्ठा लारावेल क्रेड। KINSTA कनिष्ठा लारावेल क्रेड, KINSTA कनिष्ठा लारावेल क्रेड। जिसके ट्यूटोरियल से हम देख के ट्यूटोरियल कर रहे हैं ना, कनिष्ठा लारावेल क्रेड, वही हमने यूज़ कर लिया है। DB की टेबल हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है भाई, डेटाबेस का नाम डाल दिया, एप्लीकेशन इन्वायरमेंट फाइल, लारावेल एप्लीकेशन। हमें .env फाइल को ढूंढना है कि लारावेल में ये कहाँ होती है। ये रही एक .env फाइल। डेटाबेस, तो डेटाबेस का नेम अभी लारावेल नहीं है, अभी हमारे डेटाबेस का नाम कुछ और है। मैंने डेटाबेस बनाया, नाम उसका क्या रखा है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है भूल गए, KINSTA कनिष्ठा _ लारावेल _ क्रेड। ये डेटाबेस का नाम है, ये वहाँ डाल देना है। KINSTA कनिष्ठा लारावेल क्रेड, ये मैंने डेटाबेस का नाम डाल के सेव कर दिया। इतना नाम लिख दिया, बाकी तो सब पता ही है, MySQL 127 लोकल होस्ट का ये पोर्ट, और ये मैंने डाल ही दिया नाम, रूट पासवर्ड ऐसे ही रहता है। ठीक है, लोकल होस्ट पे हम इसे कर रहे हैं PHP my admin। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, क्रिएट अ टेबल, PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल। यहाँ पे हम इस वाले को बंद कर देते हैं, एग्जिट PHP आर्टिशन, और इसे भी हम हाथ से करेंगे, मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल। तो कोई भी हमें टेबल बनानी है ना लारावेल में, तो हम विद माइग्रेशन बनाते हैं। माइग्रेशन हमारा वर्जन कंट्रोल टूल रहता है। ठीक है, तो करते हैं ऐसा, PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल, PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट टेबल।
यही सेम टू सेम हमें लिखना है। टर्मिनल में आ जाइए, लेट्स गेट बैक टू अवर टर्मिनल। PHP, मैं टर्मिनल में अभी कुछ लिख नहीं पा रहा, तो आपके संग भी यही अगर समस्या हो, यहाँ प्लस दबाइएगा। नहीं बता रहा हूँ ना, ये PHP, ये प्लस दबाना, न्यू टर्मिनल है, दबा दिया, पावर सेल खुल गया। अब लिखो PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन पोस्ट न्यू टेबल। ठीक है, तो इससे हम माइग्रेशन किसका बना रहे हैं, पोस्ट न्यू टेबल। तो इसने माइग्रेशन क्रिएट कर दिया है। अब ये मुझे मिलेगा कहाँ, माइग्रेशन के फोल्डर में। तो HTTP कहाँ है यार माइग्रेशन का फोल्डर, पता है किसी को कहाँ होता है माइग्रेशन का फोल्डर? डेटाबेस भी लिखा है क्या कहीं पे, डेटाबेस में पाया जाता है, ये लिखा डेटाबेस माइग्रेशन, इसी नाम से ये अपना पहला माइग्रेशन, इस पर अपन ने डबल क्लिक कर दी तो एलिमिनेट डेटाबेस माइग्रेशन ये इसमें यूज़ करके ये लगे हैं, ब्लूप्रिंट वगैरह लगे हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, टॉगल चैट और क्या है, कोई नहीं, जो भी है व्हाटएवर। अभी इन्वायरमेंट का कोई काम फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा, बट लेट इट बी। तो यहाँ पे अप फंक्शन होता है और एक डाउन होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये है कि स्कीमा क्रिएट पोस्ट फंक्शन ब्लूप्रिंट डॉलर टेबल, मतलब अब फंक्शन में हम कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ मैं मेमोराइज़ करके अपने दिमाग से खुद ही लिख दूँ, तभी तो मुझे याद होगा। प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार मैं अपने इंटरव्यू की, तो मैं तो मतलब चाहूँगा ना कि मैं स्ट्रांग हो जाऊँ। तो स्कीमा क्लास का स्टैटिक फंक्शन है क्रिएट, और उस क्रिएट फंक्शन में दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक तो पोस्ट जिसके साथ हमें खेलना है, मतलब ये टेबल बन जाएगी पोस्ट नाम से, और फंक्शन क्या होगा, ब्लूप्रिंट डॉलर टेबल, ये क्लोजर फंक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट में टेबल आईडी, टेबल स्ट्रिंग टाइटल, टेक्स्ट बॉडी, टेबल टाइम स्टैम्प, ये है। और कर्ली ब्रैकेट में टेबल आईडी, स्कीमा कोलन क्रिएट पोस्ट डॉलर टेबल आईडी स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉडी टाइम स्टैम्प्स। लेट मी डू इट। मेमोरी टेस्ट इधर लिख देते हैं, इंटरव्यूज आर जस्ट मेमोरी टेस्ट। Schema create, we are going to create a schema for table name here, post comma function, function blueprint dollar table, function must have this curly brackets ना, डॉलर टेबल, तो फंक्शन इज एन आर्ग्यूमेंट टेबल, function will be closed now. This create is again a function, so function inside I am closing the create function, I am closing curly bracket for this, then dollar table id, Laravel will do this for me, dollar table string type title. Everybody will be sleeping or doing Chhat Puja today.
table text body. For today I will do this much only. Okay, only this CRUD. Already 50 minutes spent. I am too slow, but this is my first session of study with me. Time stamps. So we can see one error, I don't know why. So if you see schema, create, post, function, blueprint, $table, table ID, string title, text body, timestamp this. Okay, save it. No problem till here, everything is good. PHP artisan migrate. So I will write this. What I write before: PHP artisan make migration, create post table. Blueprint $table. PHP artisan migrate. We just run this command and see what happened. PHP artisan migrate. Oh my god, all the tables are created. These are few more tables like create users table, inbuilt by Laravel. So name, email, verified, add password, remember token, timestamp. These Laravel created inbuilt. This is password reset, Laravel inbuilt table, and this one is created failed job table. So if any job in the queue will fail, it will come here. Create personal access token, pet personal access token, it will be here. So these 4 tables automatically Laravel created, and this one I told Laravel to create it for myself. Format you can see 2025 10 September, and this is time. This is our migration file. We edited the up function. Here we can also drop the table, but let's see. Let us go to our database and check if we got any table automatically created. We will just click here one more time. Okay, not only 4 tables come, one extra migrations table come, and if we click here, just this is a study session, so that's why I'm not running very fast, so that you people can understand it as much as you can. So migration table will keep the things like what all things in one batch. These all files are run. Okay, let's see our post table. It's empty now. Let's get back to our tutorial. PHP artisan migrate. We have created this table. I can see this. Now let's create a controller. Okay, in Laravel what we got next is a controller. We will do this. So PHP artisan make controller, post controller hyphen API. Why they written hyphen API, that I don't know. So what we don't know in any tutorial, we will just copy. We will take it to this Guruji, Mr. ChatGPT, and we'll ask why we used hyphen API here. We will ask him if any question come to our mind, we can directly ask to ChatGPT. This API flex tells Laravel to generate a controller specifically for API routes, meaning it will
it will include only the methods needed for an API, no view related methods. Getting my point? Only API related method it will make, but it will not make view related method. Without API, if you write resource post make controller, so PHP Artisan make controller also have two options, post controller P bada C bada, seven default methods it will make: index, create, store, show, edit, update, destroy, get post, get put, patch, post ID, delete, post, getting ID. वेब फॉर्म्स और व्यूज़ हो तो ब्लेड टेम्पलेट, बट फॉर नाउ इट्स API means index, store, show, update, get all post, create a post, show, single post, update post, destroy post. The controller is cleaner and lighter. API ideal for JSON based API. What it does not have: index, store, show, update, destroy. Index, store, create, show is there, update, destroy. So create is not there, one create is not there, and other is edit is not there. So create will show a form, edit will show a form, only these two are not there, but others are there. Backend type of thing. In the routes it will make api.php, and shortcut if you want, then you can route API resource post controller class. API generated, API controllers, JSON no blade use. So this is perfect way. You need not to create 5 paths then, but we will following right now. We have just learned route के साथ आप कॉलन करके API रिसोर्स दे सकते हो. तो what we will do now, what we will do now, firstly we will make this controller. Now we have just learned about why we use : API -API. PHP Artisan make controller post controller P bada C bada -API. I am trying to memorize these things. So again my terminal, my favorite. This one is taking so much space, right? Now Buddha, this is server. I don't need to worry much about this. This is our terminal. Now my throat is paining, so I will not speak now. If anybody asks me any question, then I will ask. This is our controller with 5 functions. Create functions, store function is to save a post to the database. So inside the store function I will come, this is store function. This function is used to store data into the database. Laravel tutorial.
now they want me to add the following code inside the empirical. Because I want to learn this, so I will not do this. What I will do, $request एक ऑब्जेक्ट है, देन उसका वैलिडेट फंक्शन रन करो जिसमें दो चीज़ें जाएंगी, दो हैं कि एक है, एक ही है, एक चीज़ जाएगी, एक एरे जाएगा, एक एसोसिएटिव एरे जाएगा जो उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेगा। टाइटल बॉडी रिक्वायर्ड मैक्स 225, बॉडी रिक्वायर्ड, ख़त्म। ये करना है। पहले मैं इतना लिखता हूँ, फिर पोस्ट क्रिएट $request ऑल। तो $request जो ऑब्जेक्ट है उसी में वैलिडेट चलता है, उसी में ऑल चलता है। पोस्ट जो है उसमें क्रिएट चलता है हमारा। समझ रहे हो? पोस्ट नाम का एक मॉडल भी होगा शायद, बाद में देख लेंगे। रिटर्न रीडायरेक्ट राउट पोस्ट डॉट इंडेक्स विथ सक्सेस पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। लेट्स राइट इट विद आवर हैंड्स। See, like in models, do I have user? I have, but I don't have model. And like this is how a tutorial will force you to use like post SSA, create, but nobody noticed like this post is not present in here. Use app model post
Guys, right now I want to make model first before. If we blindly follow our tutorial, that is not a good way. In the tutorial they have used this, but they have not told by before using it you must have this model, like what I did here. So I will scroll his tutorial and will try to reach the place where this guy has described model. Index function, update, destroy, create, show, edit, PHP artisan make model, post, PHP artisan make model, post. So I will use this command. So I just pause the controller work here. Okay, PHP artisan make model, post. Okay, now you can see in our model folder we have this post. Eliminate database, eloquent factories has factory means I can generate random data. Eliminate database, eloquent model class post extends model use as factory. Okay, protected dollar flowable title body. In the migration we have made title body, these two fields. So in the model, protected dollar fillable is equal to area title body. This is an array. I may be the most boring person right now, but in the future run it will be good. Fillable means we will allow. Other one is guarded, dollar guarded. App models post extends controller. This much is enough. We may have a scope here if we use so many where active type of in our query. We can have accessors here. We can, while getting data from DB table, mutators here while we store the data into our DB table set. Okay, this is for general knowledge. Inside this class we can have additional function to write query directly to fetch data from DB. I wrote so many things, just wanna share my knowledge. Okay, so
response redirect. Return. If we have a function, public function store request, that function should return now. So return redirect route. Request is there, return redirect route. USTS post dot index. Not only this, with post created successfully, but this route is not available right now, post.index. And if I come to routes api.php, it's all blank. You will define middleware route also here in routes.php, and web.php also all blank. Just the welcome, which you can see already it's still there, this welcome. Need not to worry about that. Let's get back to our tutorial. But here also, like, because I see the route, so I want to make this post.index route first actually. Similarly, update function, destroy, create, show, edit. We have made the model label, post controller model. Then after they make all the things, the controller will look like this. They have less space actually. In web.php, firstly we make route post.index. What we written there, which route we need actually. Inside post controller here, post.index, this route we need right now. So in web.php, make route get. Okay, this is by default system is giving us. We will just comment this one. Laravel was giving this route, and instead we will make our own route. This is a facade actually. Route colon get. So this is root of our application. At the root, what we write, something is itching.
I have changed some setting. I got tired and changed the position. Okay. Let's check name. Use actually at the rate. I don't wanna use it actually, so I did something different, and instead of route you give here name. This is named route, and we can do reverse routing also. Post.index, following as much things as we can do. So here if I refresh this page now, it will go post controller class does not exist. If you see this error now, firstly you have to add class at the top of your project. Here something like this, use http controllers, post controllers, something like this. You can see I have taken path from here now, like this, and we'll see if still we have this error or not. Still we have this error, post controller class does not exist. Let's save it. This http is inside the app, so we write app also, and we'll check if this error gone. Post controller, do we have the class with this name? Eliminate http, so we can try something like eliminate http app http controllers. S is there, app http controllers, app APP http controllers slash post controller. We'll ask ChatGPT. Is this okay? Here is something review.
we have told GitHub Copilot to review our code. Okay, they want like don't put it first one in double quotes. They don't want us to write it in double quotes. So now it is like post controller class. Only the method name we can put it in double quotes. Let's see if it works. Sorry yaar. I will just refresh it. I'm the slowest developer I think on the site. Error has gone. Only thing is that now we have not written anything in the index. It will go to index function of this post controller. So in the index function I write anything, but I will not write anything. We are just following the tutorial, so I will write things from there, what they have in their index function. They have this these two lines. I have to memorize these two lines. We can also return view, and we are going to the page of this post dot index comma compact with USTS. Whatever we are extract here, we are pasting it here, compact. This one is single quotes and the compact will be without single quotes. And direct index they were giving it like this, but this is open, so I put it in. One mistake, I corrected it. Now let me do this. PACT, a small spelling mistake. Also they give it in single quote or double quote. Let's get back to our tutorial. Single quote. View post.index not found, and of course we have not created this view. We are going to create this view. Created the route.
they do almost everything in reverse order to connect the routes. Now they're giving the controller name. What they're doing here, I don't know. This guy Kanishta made it very beautifully, but he don't know which steps to put first and which step to put later. Okay, so now eliminate support facades route. Supports facades route. Okay, just close it. Copilot help, we closed it. Now this guy is teaching us something different, how to create a command to make a view. So मेक व्यू कमांड देख रहे हो, कुछ अलग ही सिखाने बैठ गया कि मेक व्यू कमांड कैसे बनाते हैं। कोई बात नहीं, हम कमांड बनाना सीख लेते हैं, फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो। कमांड लाइन इंटरफेस, ऐप कंसोल कमांड फोल्डर, आज हम कमांड ही बनाएंगे। कंसोल कमांड भी बना सकते हैं। जब रिजेक्ट होना ही है, इट विल टेल यू लाइक कि मेक व्यू कमांड तो है ही नहीं, समझ रहे हो, बट हम बनाएंगे ना। मेक व्यू कमांड हमने लिखा है, कहाँ हो जाएगी, ऐप कंसोल कमांड्स फोल्डर में। प्रोटेक्टेड सिग्नेचर, कमांड कॉलम नेम लिखा था, मेक कॉलम व्यू कमांड है। मेक व्यू ऐसे लिखना है ना कमांड, सिंगल कोट्स में लिख दिया व्यू कि यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे व्यू नाम का। समझ रहे हो कमांड कैसे बनती है? कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ तो मैं क्यों भौंक रहा हूँ। किसी को पढ़ाई नहीं करनी।
अब हैंडल में हम कोड लिखेंगे जो उधर से लाया ना, दिस यूज़ करा, क्या यूज़ करा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है इस पाथ पे तो एरर क्या शो करोगे यहाँ पे, फाइल डॉलर पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल डॉलर पाथ की फाइल इस पाथ पे इज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हम एक कमांड बना रहे हैं कंसोल में, न्यू मेक व्यू रिटर्न, इधर लिख देता हूँ, वी आर क्रिएटिंग मेक व्यू कमांड यूजिंग कंसोल इन लारावेल। ठीक है, मेक व्यू कमांड, फाइल पुट पाथ कॉमा डॉलर पाथ दिस डॉट इन्फो फाइल। अब ये जो फाइल लिखा है क्या ये ऊपर डिफाइंड है, यूज़ फाइल। ओके, तो हमारे कोड में यूज़ फाइल लिखा है, नहीं लिखा, यूज़ फाइल, अदरवाइज़ तो चलेगा ही नहीं ना। एलिमिनेट नेम स्पेस है, अब यूज़ फाइल ये लिखा है, एलिमिनेट कंसोल कमांड नेम स्पेस ऐप कंसोल कमांड। चलो यूज़ फाइल हमने कर दिया। अब हमें सीधे सीधे फाइल में रखना है पाथ पे पाथ डॉलर पाथ, फाइल पुट डॉलर पाथ कॉलन डॉलर पाथ। What we have to do here is file put this dollar path comma dollar path. I think this may be the error, but I am not sure if this is error or not, but still देखते हैं, क्योंकि फाइल को रखो। लेट्स आस्क चैट जीपीटी। दिस सीम्स करेक्ट टू यू? I think path and then file name, good catch. This looks suspicious, probably incorrect in mode cases, like breaking down.
file put path. What file put does in Laravel file facade eliminate support facade file is a wrapper around PHP file system function. So path and contains the file path where you want to write and contains the data or text to be written inside that file. So put path you are using same variable for file. You are writing the path text itself to the file. Like if this is the path, so inside this file it will write this. So now my confusion is cleared. So put path means first one is the file name. Here we can write like first one is file name, second one is the text inside the file. Okay, so we have cleared this doubt, and now let's get back to our tutorial. $this info, so $this error. Okay, $this info file $path created. Okay, so here what we do, file $path created. I am like putting it here this side. So $this info what file, this is our parameter is created. We have created the file here. Okay, so till now we have handled function is over. Get the view full path, too long, but I will memorize the things. Public function view path $view $str replace dot with slash with $view dot blade dot php. We are going to create the blade file. Path resource views $view return $path. Get the view full path. Okay, for now I'm just making this by typing, because if I do copy paste we will understand it less. So if I type the code we will understand it more. So I'm going to create a function, public function view path $view. Before that we have like already this handle function is over. So you can see here handle function is over, and we will write another function, public function view path $view. So why we are making this? Here you guys can see it is calling something. $this means inside this class it is calling a function that is view path. So we are giving the body here. Okay, and what about that argument view? So do they have argument function also? No, they don't have this argument function. So where it can be? It can be inside this command. The body should be, because here we can see the inheritance class make view command extends the command. Okay, so what we do here, view path, first we type this $view is equal to str replace string replace dot with forward slash and in $view, and then write this. I will type. Of course it's difficult, but I will still type it. Okay, so $view is equal to $view is equal to str replace means string
स्ट्रिंग रिप्लेस करो डॉट को / $व्यू में और फिर कॉन्केटिनेट कर दो .blade.php. ओके, दिस मच आई हैव मेमोराइज्ड. If you directly don't understand what you doing, then you can memorize the thing, and after memorizing you can like repeat it 2-3 times. It will be pakka to you. Concatenation .blade.php. I think this is correct. Let me check. View.blade. Okay, string replace will be there, and whatever the string we will get, string replace function will over here, and what all the string we will get, then we will add this part to this, and it will not end here, it will already end there. And this extra space PHP will handle it. Okay, so PHP will handle the extra space. Okay, so what we did is we replaced this with this. Okay, let's move to the next part. Everyone knows like we have our views in the resource folder. I can show you here. Here I will show you the resource folder. Database resource folder is here. So here views welcome.blade.php. this is like one example. So you can see in resource folder, then views folder, we have this, and we are making a command to do this automatically. And I already shown you like command make.view is not defined, right? By default Laravel is not giving it, so we are making a command like PHP artisan make model, PHP artisan make controller. These two commands were there. So for view we are making the command by ourselves by following this tutorial. So let's do this. $path is equal to in double quotes resources / views / view, and then return $path. Okay, let me do it quickly. Path is equal to resources resources / folder name is views. I've closed it for now. Views. Okay, $view. Same thing only. They write it this way, but I write it some other way. But what I understand it will be working the same thing. We can do it two ways anyway. Okay, they use this double quotes outside, so they given here curly bracket, and I have like closed it and then I concatenated it. So both are same thing only. We will keep this one ours. Do not copy paste everything. Try to learn also what's new and what else we can do. So this function is completed. Now create dir. I thought this is an inbuilt function, but just now I came to know here we used create dir. This is not inbuilt function, we have to create this function. Okay, so let's do it quickly. This much is easy only. Public function create dir. $path will come, and dir name means we will get the directory. Then if not file exist dir, if that directory is not exist, mkdir, we will create the directory and they will give all permission, read, write, execute and true. So these 4-5 lines I need to memorize them, and let's see file underscore exist, if I can mkdir, if I can exist these, learn if I can memorize. And okay, let's see. Public function create dir $path. Sorry,
our function started. Now dir something, some inbuilt function na, dir name dollar path, and we will get like $dir. What is the next line? If not file exists, $dir. If not, this is not file exists exist $dir. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करेंगे, बना देंगे mkdir. if file not there, we will create the file mkdir. These three parameters. Okay, $dir comma 0777 true. Okay, 3 curly braces. This is done. I don't know if you guys got this doubt or not. Like, I wanna know more about it, like getting more explanation. So I will go to ChatGPT, we'll put it there, we'll say explain it. So perfect. ChatGPT is explaining me is like, first one is directory, second is permission, bool recursive false. We taken recursive true, and it's also true. What is that? What is that recursive thing? dir can be this path of directory you wanna create, permission mode for new folder read executable. If true, it allows recursive creation. It will create parent folder automatically if they don't exist. Without recursion, it will fail. Okay. Now our command is ready. We will save it and then create a home page. Make view post.index. Now we understand, like, post.index means they will create the post folder also, I think. So str replace what we don't understand that time. They will replace this post with this. So now it is clear for us, you know. PHP artisan make view post.index. Okay, let's do this by our memory posts.index. terminal भैया, PHP artisan make view क्या बना रहे थे भैया, हम तो भूल गए. हम बना रहे थे posts post.index, I think. Wow, post.index. Everything is correct, but you notice here views post, it should have add one more slash. So we'll see. Views, it made another folder views post and then index blade.php. Now we got a task, like why we are not having one more slash here. It created a file for us and write something there. These two things are good, but we want view slash means here it should be inside that, but it is not going there. So we will be correcting this, and you know we are good developer, so let's try to correct our code. Resource views slash post, resource views slash post. Okay, what we do, we are adding just one more slash here.
and we'll try to make another thing if that works. This was the old command, and index, I am just writing index 22 just to test. This time it worked. You can see path here, so by seeing this path I can say this time it worked. And for confirming, we will go to our place. Inside views we have post, and inside post we have this. So what we do, we will delete this folder with the file. We don't need it anymore. And I have to, okay. And this file right now I don't know. You will ask why, because 22 is there. So I will create new file. Okay. And now inside our view folder you can see we have made the file. Okay. And what only changes this is this. This one actually we deviated here from the tutorial now. Yes, actually they used one extra slash here while deviate. We forget to write this extra slash. That's why we got one error, but no problem with that. Let's move forward. Okay, so what we learned today, like we can make our own command also inside console if we want, but we need to give code for that. Like I made one command today that will read the view argument, and whatever returning that view path, and we made the function view path, we made the function create dir. Okay, let's move forward. Now we have index.blade.php. This is some extra stuff we did for learning. Till here everything worked fine. I want to test one more thing. It will just take simple, like if I don't give this post.index and if I directly give the path, what will happen? Okay, so for testing purpose I will delete it. Like I will give like Vibhor my name for testing purpose only. Here if I give like PHP artisan make view and I give my name Vibhor, so it will make Vibhor dot oh my god, some error I think. It is stuck, some error, and I got something like I have to find out what's the error because I can't see the file also. So oh my god, it created, wow, there is no error, it just took more time. So let me confirm view post vibhor.blade.php. Okay, this command will work only for this project. If I want the same command to work in other project, then I need to copy paste this file to those project also. Does Laravel 12 have make colon view command? Like I'm simply asking. PHP artisan make view is available. And in Laravel 10, actually I was working in Laravel 10 in my last company, so I'm asking this also, but there was no official make view command for Laravel 11 12. So it started from Laravel 11 and 12. Now we have make view command, but we are so strong and intelligent, we made our own command.
I need to worry not. Index.blade.php have this many things, so this is too long for me to type, so right now I will copy paste this, but I will explain this to you fastly. Too much to write, not too much to type, so I am copy pasting this index.blade.php, but I will explain you. Okay, let's move. This is extra. Index.blade.php, removing it, putting it here. Now guys, I have to explain you this file. Doc type HTML means it is HTML5, HTML lang en, it is in English language. Head meta UTF-8 character set, this is actually pure HTML, but character set of character. UTF unified text format 8 means what all characters it can have the text. Viewport means here if you see this page in mobile also, it will look you good. Meta name viewport. Content width is equal to device width, initial scale 1.0. okay, so here bootstrap they want, and relation style suit. So title post, some navbar bar, cred post, add post, route, post.index. so this route you saw here, route only one route I made, post.index. I will make other routes also. Just now learning is more important than rushing. So post.create. If you have any problem in this, you can ask me in comments. For each $post as post, you know we have used compact Vera. Here we have used a compact post. So this post model, okay, all function will give us many posts, and using compact keyword we passing it to in this view. Okay, so we will get it as a $post, as same as POSTS. so we got it here as post and as $post. @ for each, we use @ and then we can write without @ we can write normal HTML, then in double quotes, double curly bracket we can give PHP related stuff, otherwise HTML stuff. Inside form @ CSRF we will give, @ method delete we will give for deleting. You can see easy stuff. End of our for each loop, because we will get many posts and we can delete them. So this code is clear to you, right? Let's move to the next section. Next part is okay, PHP artisan make view post dot create. Okay, let's do this. PHP artisan make view post dot create. This before file I am deleting right now because it's not required, for just testing I was making it. Create and add the following code to create.blade.php.
same as previous file. Add the following after the nav tag and before the closing body tag. After the nav tag and before the closing body tag. Okay. Before the closing body tag. What he is saying, I am following him blindly, but I will explain you code from here. And what he wrote there, I am doing the same thing. Okay. Till here is same. In for each loop they were displaying the rows, and after this container, this height 100, margin top 5 pixel, this is bootstrap, height 100, justify content center, they want content to be in center, align items center, call 10, all bootstrap thing. Now this is a create blade, so we want to add a post h3 form action route post store method post @csrf cross site request forgery is the full form of this, and we want this inside our form so that that website impersonation attack should not be there. Title body submit create post, that's it, nothing special. Okay, you guys notice post.store we don't have, so I'm worrying. I want this route to be here, but this time I will give all the other route also. Web.php, and this route is missing. We can do it ourselves as well. Route, when we use store get post, you will give post, and but let us take from the tutorial now. /store comma, first we are testing our mind, and then last option we can take from there. Store name, very slow I am slow because I wanna learn more than just copy pasting and rush things fastly. I wanna learn also. My first priority is to learn, then to finish it. Like here, see here is store function, how they used it. The same way I used it. /posts store function, no? posts. How we written a store /post posts post.store posts. Anything we can write here. posts. So this is a end point. We call this as end point, this much. Okay.
Let me speed up. Don't use comma, use dot in double quote after it. So
Now inside our controller we will be filling the all other remaining functions. This is our controller file. This is our very first function index, and we see only 2 lines written here. These two we also written. Another one is store function, all 4 lines written. Then update, in update function show update. So show function is downside. Okay, but first we saw the update function. Update request $id. Update function, update function is here a request $id. When we want to update something, should I try to write the code by myself, or should I see there and then I write? A request will come. So our first thing is to, and a ID will come. We have to validate if request is okay or not, and then with the ID we have to like update only, na? I will first try to write it by myself. Okay, so for that purpose $post find ID. Validate was, we did validate na, request validate, validate title max 255. We will do this thing. First we will validate the request. Okay, even if it's update, but we will request validate. So $request, we will validate it. Array. Okay, which array? Associative array. Then a title must be required, and pipe sign 255 is the max length we want. Title and alag is body. That is only required we have. So how they do request validate here? Only this much, means automatically everything will be handled. Okay, so cut. Okay, now I checked. They did the first step is same thing. Then they find using model. Then they find our ID, this ID, and then they request all. They will post update. This is the object, and they update and return redirect route post index with success, post updated successfully. Redirect route, return redirect route. Okay, I think I can do $post single post. Post is a class, and we will find $id. We have find it. Now update is a command. $post ऐसा वाला check request all. update post, बट ऐसे नहीं होता ना. wrong. $post have inbuilt function update. This function update, and what it will do, $request, which is already validated, all part of it should be updated. Okay, return redirect
route post dot index. This will work, but we want to show some flash message also using session. So with success, it means it will show in green. So post updated successfully. Let's match success. It will show in post updated successfully. Okay, so another function is destroy. Okay, destroy means when we are going to delete something, destroy $id. First you will find the post till here it's in post, then $post have the update, $post also have the delete function, then redirect it to same index page. I think this time I can do it all by myself. $post, first we need to find which post we are talking about. $id we are talking about this post, then $post have the function delete. Delete what? $post request here I stuck, or simply delete. No need to pass any argument. Okay, once you delete then you will return ना. कोई काम हो जाता है तो घर आ जाते हो ना, तो रिटर्न लगाओ. रिटर्न रीडायरेक्ट मतलब कौन से पेज पे हमें जाना है. पेज पे तो नहीं, हमें राउट के हिसाब से जाना है, तो रीडायरेक्ट राउट में कहाँ जाओगे, इंडेक्स में ही जाओगे ना. तो पोस्ट तो हमारा फोल्डर है ही, और इंडेक्स ये राउट का नेम है. रिवर्स राउटिंग के रूल के हिसाब से यहाँ में जाना है. अब किस मैसेज के साथ जाना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ऐसे SUCC और सक्सेसफुली डिलीट हो गया, और लिख देंगे कुछ पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली. ओके, अभी भी एरर बता रहा है. क्या गलती किया हूँ मैं? विद, मैं इसमें विद कीवर्ड नहीं लगाया. अब ये जो विद होता है ना, ये एक सेशन में आता है. सेशन वेरिएबल में सक्सेस डाल देता है, और मतलब की वैल्यू पेयर जैसा रहता है. तो सक्सेस जो सेशन में वैल्यू रहती है, उसकी जो की रहती है, की सक्सेस रहती है, और वैल्यू रहती है पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली. तो वहाँ पे ये दिखा देता है. डेस्ट्रॉय भी बन गया. क्रिएट,
ये देखो गाइस, हम आउटपुट तक आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें ऐड पोस्ट चलाना है। वाह, क्रिएट। Study with me session I am doing online. You people can do your study. I do my study.
पूरा का पूरा एक ही सिंगल कोट में आएगा। देखिए गाइस, डीबगिंग करना भी आना चाहिए, एक कला है। फॉर्म रीसबमिशन हाँ कर दो। वैलिडेटर वैलिडेट, मैजिक मेथड, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मेथड एग्जिस्ट नहीं करता? वैलिडेटर का वैलिडेट मेथड नहीं है। स्टोर में क्या लिखे थे ये लोग? रिक्वायर्ड मैक्स कॉलन 225। अब देख लेते हैं। Your design is not good. Update working, delete I will not do. I will add another post for delete only. For delete, create post. So because I made this post for delete only, I am going to delete this. Deleted. Add a post again. Just I want to improve the design of my update. Edit this. Post 3 edit. Go to the near router, post 3 edit. Get post 3 edit, post controller, edit function, post dot edit. This will be like do my job of showing. I'm trying to make this page more beautiful. Inside the view, post dot edit.
गाइस हमारा क्रेड बन के तैयार हो चुका है और इसी के साथ ये सेशन भी ऐड कर देते हैं। नाउ अवर क्रेड इज़ रेडी, अपडेट हो रहा है। डिलीट के लिए एक और पोस्ट ऐड कर देते हैं। टेस्टिंग फेस में है ये, वी आर टेस्टिंग डिलीट डिलीट। तो हमने एक और बना दिया है और इसी को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट। तो गाइस आपने देखा क्रेड कैसे बनता है। और मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि जो कनिष्ठा है क्या ये होस्टिंगर की तरह सिंपली बेटर होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस एंड नाउ फर्स्ट मंथ फ्री प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन। मतलब ये भी एक होस्टिंग है वर्डप्रेस के जैसा, ठीक है, या होस्टिंगर मान लो। जो हमारा टास्क था क्रेड बनाने का वो पूरा हो गया। हमने क्रेड बनाते हुए बहुत कुछ सीखा। अब टाइम 2:41 हो गए, बहुत टाइम हो गया गाइस। मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो ये सारा सोर्स कोड है, चाहिए हो तो मांग लीजिएगा, मैं दे दूँगा आपको सोर्स कोड सारा। इतनी सारी फ़ाइलें बनी हैं और हमारा एकदम परफेक्टली हमारा चल रहा है। बाय बाय गाइस।